force on a moving charge in the presence of magnetic field is also called Lorentz force. If a charge is present in external electric field, then we know that force is QE. But if magnetic field is also present, then force is given by this additional factor Q times V cross B. If both electric field and magnetic field are present, then force on the charge is QE plus Q times V cross B. This is something which we have studied in electrostatics. This is the additional information which we will study in this chapter. This complete form is called Lorentz force. Remember, complete form is called what? Lorentz force. But right now we are interested only in this part. So let's focus on the magnetic force only. Q times V cross B. The first thing you can notice is cross product of velocity and magnetic field, which means suppose charge is moving in this direction with velocity v and magnetic field is present in this direction. We have a charge Q of mass m, and this charge Q is moving in this direction with velocity v in the presence of magnetic field B. Remember, this B is external magnetic field. External magnetic field. What do I mean by external magnetic field? You know that a moving charge also produces magnetic field. In that magnetic field, we are not interested. We are interested in the magnetic field of a device which created its own magnetic field, and in that magnetic field our charge is moving. For example, let's say we have a bar magnet and a charge is moving like this. If a charge is moving, this charge is moving in the presence of magnetic field produced by this bar magnet. That's what we are interested in. And therefore I said external magnetic field. If angle between V and B is theta, then magnitude of this F is Q into V into B into sine theta. Q, how do you open cross product? V into B into sine theta. That's the magnitude. And now let's discuss direction. Every cross product, it's very easy to define direction. Direction of force is perpendicular to the plane of V and B vectors.
and is given by what? Right hand rule. Right hand rule means what? या तो फोर्स इस तरफ होगा V and B जिस प्लेन में है उससे 90 like this, or it will be like this. And we have to decide whether force is pointing out or is pointing in, and that is decided with the help of right hand. Curl right hand fingers from V to B like this, V to B, V to B. This curling is from V to B. Curling should be done with the help of right hand. And the moment you do that, your thumb you can see is pointing inwards, and therefore force on this charge Q is inwards like this. This is the direction of force. It's an inward pointing force. इतने पार्ट में क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है? एक तो ये पूरी इंफॉर्मेशन, and then also note down the statement regarding the direction part. Note down the statement. Direction of magnetic force is perpendicular to the plane of V vector and B vector. Direction of magnetic force is perpendicular to the plane of V vector and B vector, and is given by right hand rule. That is, curl right hand fingers from V vector to B vector. Curl right hand fingers from V vector to B vector. Then thumb points in the direction of magnetic force. But I hope कि आपको इसमें एक additional चीज और दिख रही होगी. Other than curling from V to B, you can see that direction of force will also be decided by the polarity of charge Q. So when you wrote this statement that curl right hand fingers from V to B, then thumb points in the direction of magnetic force, this statement is true only if charge Q is positive. Write down this. Provided, continue with that statement, provided charge Q is positive. But if charge Q is negative, then direction of force is just opposite to the direction where thumb points. Now suppose this charge Q is an electron. In case of an electron, your thumb, you found that is pointing in. If it points inwards, you will say that direction of force is what? Opposite, that is out. So it's nothing but mathematical system. V cross B, whatever be the direction of V cross B, you get it with the help of what? Right hand rule.
हमेशा हर जगह जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक ही तरीका है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ राइट हैंड कर्ल करो एंड देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स Q. This is the additional factor. अगर पॉजिटिव है you will maintain that sense. अगर Q नेगेटिव है तो जो फोर्स आपका थंब से आपको दिख रहा है उधर ना होकर कहां होगा, in the opposite direction. Not a very difficult thing, easy part. Now, second thing जो अपने काम किए यहां पर, just like we had this statement in electrostatics, when charge is at rest, it produces only what, electric field, and when it moves, it produces electric field as well as magnetic field. You can see that if charge is at rest, V is 0, then force will be only due to what, electric field. But if charge is moving and both electric field and magnetic field are present, then force will be due to electric field as well as magnetic field. ये हमेशा है, लेकिन magnetic field का force केवल कब लगता है, when charge is moving. Write down this as the second point. Magnetic force acts on the charge only if it is in motion. Magnetic force acts on the charge only if it is in motion. A charge at rest experiences no magnetic force. A charge at rest experiences no magnetic force. The next thing is what? Role of this theta. I hope you can see that if theta is 0, what is sine 0? 0. If theta is 180, what is sine 180? 0. That means if charge is moving along the line of magnetic field, in the direction of magnetic field or just opposite to it, parallel or anti-parallel, in that situation, even if charge is moving, force will become what? 0. Note down this point, third point. If charge Q moves along the magnetic field line, that is parallel, inside the bracket theta equals to 0, or anti-parallel, inside the bracket theta equals to 180 degrees, force on the charge will be 0. In fact, that's how we decide direction of magnetic field. If in a region magnetic field is present, then if you want direction of magnetic field, do what? Move a charge. If charge moves undeflected without any change in direction and magnitude of velocity, we'll see that magnitude is something, we'll discuss that later. If you find that there is no deflection, that means that is the direction of magnetic field. Listen again. If a charge moves in this direction and you found that magnetic field is present but still there is no deflection,
in the path of the charge. It doesn't move like this, it doesn't deviate like this. That means magnetic field is present along this line. It can be in this direction or it can be in this direction. But as of now, you just remember this format. Format says what? If theta is 0, you can in fact note down like this. If situation is this, charge is moving and magnetic field is present in this direction. This is the situation where theta is what? 0. And force therefore becomes 0. Or situation is like this, charge is moving in this direction but magnetic field is pointing opposite like this, B. This is a situation where theta is 180 degrees. Theta is 180, you know what sine 180 is? 0. And therefore, in both these cases, force on the charge will be 0 and it will move without any deflection, any deviation. This charge will continue moving in this direction. This charge will continue moving in this direction. You can note down this part also. तो अभी तक की जो कहानी है उसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है. Force, if both electric field and magnetic field are present, then is given by QE plus Q times V cross V. इस चीज को हम देख चुके हैं इलेक्ट्रो में, इसलिए हमने इसको हटा दिया. So in this chapter we are interested in the magnetic force. If charge Q is moving with velocity V in an external magnetic field, charge अपना खुद का फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, उसकी बात नहीं हो रही, फील्ड किसी दूसरे का होना चाहिए, then this much force will act on the charge by that external magnetic field. Hopefully statement समझ में आ गया होगा. And then regarding direction, always follow what? Cross from V to B. It's a very simple thing. Thumb should be perpendicular to the plane of V and B. या तो thumb बाहर रहेगा या अंदर रहेगा. Not like this. Thumb should be perpendicular to the plane of V and B. This or this. If you hold your thumb like this, then force, then the curling is from B to V, B to V. But we need a curling which is from V to B. For that, thumb should point like this. And then we'll see a second method later on. अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन को नोट करिए. एक बार आपने ये इंफॉर्मेशन नोट कर ली तो इस साइन थीटा पार्ट को फिर से समझते हैं इस साइन थीटा पार्ट की हेल्प से. क्या बोला है मैंने अभी समझ में आएगा, देखना है. यहां पर हमने बोला कि भाई हमारा चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है V से, and this is the direction of magnetic field. This angle is what? Theta. यहां हमने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट along the magnetic field line. And then I told you that that's how direction of magnetic field is decided. कि अगर आपको दिखा कि एक चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो पक्का है कि मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा. अब this is V. Let's resolve this V into its components. V, this component of V is V cos theta, and this component of V is V sin theta. Now what is happening? V cos theta component
is parallel to what? Magnetic field. और अपने को क्या पता है कि अगर कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करती है तो उस पर फोर्स नहीं लगता, उस चार्ज पर फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब v cos थीटा की वजह से फोर्स कितना डेवलप हो रहा था? 0। तो अगर v cos थीटा की वजह से फोर्स 0 है तो फोर्स किस कंपोनेंट की वजह से है? v sin थीटा। And therefore you see this sin theta. You can even arrange this part like this: q times b multiplied by v sin theta. What does it say? It says that velocity component which is perpendicular to the direction of magnetic field will produce the force. तो फोर्स इस कंपोनेंट की वजह से है, इस v cos थीटा का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। जस्ट समझने का तरीका, किस तरह से आप अलग अलग तरह से विजुलाइज कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज चाहते हो, ये रहा सामने q v sin थीटा, दैट्स ऑल, इससे काम चल जाएगा। बट इफ यू नीड सम मोर विजुलाइजेशन, तब मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं उनको याद रखना। नाउ जैसे ही मैं यहां पर ये शिफ्टिंग करता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि ये शिफ्टिंग भी हो जाएगी b and v, but I hope you know this is cross product. You cannot switch these positions. It should be v first and then b. This is the magnitude part, इसलिए आप किसी भी चीज को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। तो क्या अपने को कहानी मालूम पड़ी कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस चार्ज की जो वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, फोर्स विल बी ड्यू टू दैट कंपोनेंट ओनली। राइट डाउन दिस एज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमने यहां से अभी कलेक्ट किया। इफ अ चार्ज इज मूविंग if a charge is moving in an external magnetic field, ये external केवल अपने दिमाग में ये फिट करने के लिए कि भैया मूविंग चार्ज भी खुद का फील्ड देता है, उससे कंफ्यूज ना हो जाए कोई। If a charge is moving in an external magnetic field, then force on the charge is due to that velocity component. Force on the charge is due to that velocity component which is perpendicular to the direction of magnetic field, which is perpendicular to the direction of magnetic field. अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर नोटिस करते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, एंड देन रोक दिया था मैंने अपने आप को आगे बढ़ने से। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तब तो कोई फोर्स नहीं है दोनों सिचुएशन में। अगर कोई फोर्स नहीं है, then there is no deviation in the path. ना तो पाथ चेंज होगा, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। अगर फोर्स नहीं है, that means there is no acceleration. If there is no acceleration, what is acceleration? Rate of change of velocity. That means nothing will change. ना तो डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ इस तरह से हो, लाइक से हमने बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तब तो फोर्स लगेगा। अब जब ये फोर्स लगेगा तो ये चार्ज डिफ्लेक्ट होगा।
that means V is going to change. And why V changes in this situation? First of all, let's see the direction. कहां से कहां कर लिंक? V to B. कहां से कहां कर लिंक? V to B. Thumb is pointing in. इसका मतलब ये जो हमारा चार्ज Q था, इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगा है. तो हुआ क्या था? हुआ ये था. That was the direction of magnetic field. चार्ज आया इस तरफ, like this. जैसे ही चार्ज आया, मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगाया. इस अंदर के फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा. आई होप यू कैन विजुअलाइज दिस. अगर डिफ्लेक्ट हुआ, तुरंत हमने बोला V क्या हो जाएगा? चेंज. बट नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस V. What is V? V is this. V. That is the magnitude part. हम इस चीज को जरा देखना चाहते हैं कि इसके साथ क्या होने वाला है. Now, what is this? Cross. Cross का मतलब क्या? Force किस डायरेक्शन में है? Velocity and magnetic field दोनों से 90 डिग्रीज पर. जब आप बोलते हैं कि फोर्स V एंड B दोनों से 90 पर है, तो अगर आपका फोर्स V एंड B दोनों से 90 पर है, इट्स लाइक दिस. दिस इज V, दिस इज B एंड दैट्स द फोर्स. फोर्स V एंड B जिस प्लेन में है, उस प्लेन से 90 पर है. लेकिन ऑटोमेटिकली हमारा फोर्स किससे 90 पर है? वेलोसिटी से. दिस इज द वेलोसिटी. फोर्स इज लाइक दिस. आई होप यू कैन सी. ब्लैक मार्कर के साथ एज वेल एज ब्लू मार्कर के साथ फोर्स का एंगल क्या बनेगा? 90. इनफैक्ट डू वन थिंग, राइट डाउन फ्यू स्टेटमेंट्स. पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं. Magnetic force is always perpendicular to the direction of velocity vector as well as magnetic field vector. Magnetic force is always perpendicular to the direction of velocity vector as well as magnetic field vector. And since force is perpendicular to the velocity vector, power delivered by magnetic force to a moving charge is, pause the video and think about it. What is the power delivered by magnetic force to a moving charge? Think about it. What was the formula of power which you learned in 11th? हमारे पास 11th में पावर का फॉर्मूला आया करता था F डॉट V. और इस डॉट प्रोडक्ट पता है आपको, लेकिन फोर्स एंड V इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 90. क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है? फोर्स हमेशा वेलोसिटी से किस एंगल पर होगा? 90. तो दुनिया का कोई भी केस हो, सिचुएशन हमेशा कुछ इस तरह की रहेगी. वेलोसिटी जो भी होगी, फोर्स
हमेशा वेलोसिटी से 90 पर होगा। कंफ्यूज मत होना। दिस थीटा इज बिटवीन v एंड b। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो। फोर्स क्रॉस, क्रॉस मीन्स जो भी v का डायरेक्शन होगा फोर्स उससे 90 पर होगा। और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट सुना होगा आपने, क्या हुआ करता है? जीरो। कंटिन्यू दैट स्टेटमेंट। हमने क्या ये सिचुएशन बनाई हुई है, इसको आप स्टेटमेंट के बाद नोट कर लेंगे। तो सिंस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ since force is always perpendicular to the direction of velocity vector, power delivered by magnetic force to a moving charge is always zero. And then note down this whole thing. अब अपने को मालूम पड़ गया कि भैया पावर क्या है? जीरो। बट व्हाट इज पावर? पावर हुआ करती है रेट ऑफ वर्क डन, dw by dt. That's what power is, rate of doing work. If rate of doing work is zero, तो ये अपने को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्टेटमेंट, दिस होल स्टेटमेंट, इट सिंपली सेज दैट वर्क इज व्हाट? जीरो। पावर अगर जीरो है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? वर्क जीरो है। नाउ कंटिन्यू दैट स्टेटमेंट। सिंस पावर इज जीरो, work done by the magnetic field is always zero. Work done by the magnetic field is always what? Zero. अब अगर वर्क जीरो है तो वर्क क्या हुआ करता है? 11th का कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो वर्क हुआ करता है डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप वर्क नहीं करोगे तो फिर चार्ज की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। नाउ कंटिन्यू द स्टेटमेंट अगेन। Therefore, change in kinetic energy of a moving charge in the presence of magnetic field is always zero. Now what is kinetic energy? Half mv square. तो आप क्या बोल रहे हो कि half mv square is something which is not going to change. If it doesn't change, that means what is not changing? V. If V is not changing, that means we have concluded that V, it remains what? Same. Now continue the statement further. If kinetic energy remains same, then it means that speed of the charge, velocity नहीं, speed of the charge in magnetic field
never ever changes. Speed of charge in magnetic field never ever changes. Look, I didn't say velocity, I said speed. What is speed? Magnitude. What about velocity? Velocity तो change होगी. Force लग रहा है. अगर force लगेगा तो acceleration होगा. अगर acceleration होगा तो velocity change होगी. लेकिन उस velocity का क्या change नहीं होता है? Magnitude part. केवल क्या change होता है? Direction. तो जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अगर सिचुएशन ये है तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन, क्योंकि इस केस में फोर्स ही क्या हो गया है? जीरो। और बाकी सारे केसेस में कुछ हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड स्पीड रिमेन सेम. द थिंग व्हिच चेंजेस इज व्हाट? डायरेक्शन. Write down this. Last line as an important line. Note down this. If a charge is moving in an external magnetic field, if a charge is moving in an external magnetic field, then its speed never ever changes. Its speed never ever changes, and if it is not moving, along the line of magnetic field, then only direction of velocity changes. Then only direction of velocity changes. अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी से कंफ्यूज मत हो जाना भाई, सीधी सीधी इस इंफॉर्मेशन को याद रखना. ये है मैग्नीट्यूड वर्जन. इसने क्या बोला? थीटा जीरो होगा, फोर्स जीरो हो जाएगा. जब फोर्स ही जीरो हो गया तो फिर ये सिचुएशन है. दोनों फोर्स नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. स्पीड नहीं बोला है मैंने, क्या बोला है? वेलोसिटी. व्हेन आई से वेलोसिटी, स्पीड इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड. लेकिन अगर फोर्स है तब भी स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी. क्यों होगी? क्योंकि फोर्स है. फोर्स का मतलब ही क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होना. तो अगर फोर्स है तो वेलोसिटी चेंज होगी. लेकिन ये फोर्स स्पेशल है, ये हमेशा v से किस एंगल पर लगता है? 90. एंड देयरफॉर चाहे कुछ हो जाए, स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड नेवर एवर चेंजेस. होपफुली इतनी कहानी समझ में आ गई होगी. नोट डाउन एवरीथिंग.